Hey, hi guys. Again, in this video, we'll going to see a heart disease prediction. So I'll just write name of our notebook is heart disease. Disease. Am I writing right? No, wrong. Just tell me. Okay. Prediction. Okay. So this is the project about the heart disease prediction, and we have a data set with us. So I'm gonna read our data set and we'll go move forward. So first of all, what we're gonna do, we'll import. If I want a okay, markdown, I want to mark down is import library. Importing library. So first we'll import library. Okay. Uh, library. Let's see. We start importing library. So initial important libraries are import numpy. इसके सिवा होता ही नहीं है कुछ भी स्टार्ट सो numpy pandas as pd and import matplotlib dot py plot as plt and after that we have import cbon as sns तो ये हमें import कर लेनी है बिकॉज ये एकदम से लगनी है these are the library we needed in any any kind of machine learning deep learning machine learning and data science project because these are the very like it is very important libraries to have with us. Okay, so first we start with understanding our data. So understanding our data means क्या? So we need to import our data and data import को हम क्या use करते हैं? Right here, understanding our data. कभी भी as a data scientist you should understand your data means you know what is data. If it is a financial data you should know some terms related to finance. You have that domain knowledge with you. और आपको उस domain knowledge नहीं है तो go search जो project कर रहे हो for a client. आपका client it belong to a finance background तो उसके website पे जाके उस डेटा के बारे में रीड करो. इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट टर्म्स just go and google it out कि क्या है terms and then if you have a pharmaceutical client or pharma client then read their formulas or whatever in your data set. You have to have that domain knowledge, otherwise you cannot understand that data as a data scientist. This or कुछ लोग बोलते हैं इफ पीपल अराउंड अस लाइक आपको कुछ यूट्यूबर्स बोलते होंगे. आई एम नॉट अपोज टू देम बट ये बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि डेटा मॉडलिंग और ईडीए इज अ पार्ट ऑफ अ डेटा साइंस. Yes, it is a part of a data science, but it is not like ki 30% for modeling, 20% for data. It's not like that. Nowadays it is a vast, the competition is very vast. You should have all the knowledge. Like आपको deploy भी करते आना चाहिए. You have little bit knowledge of a cloud. You should know some terms like CI/CD tools कौन से. You should know all of this. आप बस ये if you are learning only those things की deploy इंपोर्टिंग numpy पांडा तो ये अभी एक नॉर्मल थिंग हो गया है. एज एनालिटिकल पर्सन भी उसको भी ये चीजें आती है. सो यू एज अ डेटा साइंटिस्ट व्हाट यू हैव वो आपको शोकेस करना है. ओके, योर रिज्यूमे शुड बी रिफ्लेक्ट दैट. नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर अ कॉल. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू अभी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे. इसके लिए हम लगे तो एक कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके बात करेंगे सब लोग. एक कन्वर्सेशन होगा. लाइट विल स्टार्ट विथ our CSV. You can see here our CSV. आपको
आपको सीएसवी के साथ इसमें लाना है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो देख लो वीडियो। ये सीएसवी यहाँ पे आता है, आपको यहाँ से जाके रीड करना है अपलोड बोल के, और आपके जो सी फोल्डर में है उसमें से आपको रीड करके यहाँ पे लाना है। सो वंस यू हैव योर सीएसवी फाइल विथ यू, तो आपने हेड करके जो फर्स्ट 5 रोज है तो वो निकाल दिया। इफ यू वांट last 5 rows, you just use the tail to get the last rows of your data. Okay, then we'll check हमारे डेटा में शेप देखेंगे डेटा का कि शेप क्या है। So you can see here it is a small data. Again, this data is not for resume data, or it is not for uploading or anywhere else. It is just for understanding the concept of a data science, applying algos, learning new things. So we are learning here, and जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जस्ट वीडियो देख के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी बेटर एंड बेटर every single day. Okay, so after that we will use a describe here, df dot describe, and by using a describe आपको क्या मिलता है? Anyone? डिस्क्राइब से आपको क्या मिलता है? डिस्क्राइब से आपको मिलता है स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा सेट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि इसमें अभी आपको नंबर ऑफ काउंट मिल गए, हर एक रो में कितने काउंट है वो मिल गया, उस रो का उस कॉलम का मीन मिल गया। लाइक यू कैन सी हियर एज, एज का मीन मिल गया, सेक्स का मीन मिल गया। अभी 6 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यू आर गेटिंग अ 0 6 बिकॉज इट इज अ कैटेगरिकल डेटा 0 और 1 में। तो उसने क्या ले लिया, 1 का मीन ले लिया या उस डेटा का मीन ले लिया। सो वहां पे 0.6 आ गया, मतलब यू कैन सी 1 इज मोर देन द जीरोज। सो 1 may be denoted for a man and 0 for denoted for a female. So ये इस डेटा सेट में एज अ मेन ज्यादा है। यू कैन सी हियर, यहाँ इस आपको ये देखने के बाद है ना बहुत कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है इसमें से ना। यू बाय यूजिंग द डिस्क्राइब ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके डेटा सेट में आउटलायर है या नहीं है। बिकॉज जब आपका 75% की वैल्यू जब मैक्सिमम के नियर होती है ना, तो समझ जाना कि यू हैव outlier in your data set. It is one of the concept actually I have read somewhere, so वो मुझे पता है। Okay, after that we'll go forward and we'll see कि हमारे पास कॉलम कौन से। So how we get all the columns, like by just typing df dot column. So we have like age, sex, chest pen type, bp, cholesterol, fbs over 120, EKG result, max HR, exercise, angina, CT depression, then slope of ST depression and slope of ST, number of vessel floor। तो आप बोलोगे यार ये क्या है इस डेटा में? तो मैंने वही बोला कि डोमेन नॉलेज होना जरूरी है। आई नो एज अ इंजीनियर आपके पास हर एक चीज का डोमेन नॉलेज नहीं हो सकता है। सो फॉर दैट व्हाट कैन यू डू, जब आपका इन कंपनी आपको हर टाइम को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी में जो एसक्यूएल वाली टीम होती है, जो डेटा बनाने वाली टीम होती है, उसके पास इस डेटा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, या आपका जो मैनेजर होता है उसको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है। सो यू हैव अ मीटिंग इन योर कंपनी। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो आपको एक स्लाइड में आपको समझाया जाता है कि दिस इज द डेटा, और ये डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएगा कि ये बैच टाइप डेटा है या कंटिन्यूसली आने वाला ऑनलाइन रियल टाइम डेटा है। ओके, तो आपको ये दोनों का डिफरेंस मिलेगा। पहले तो ये बैच टाइप होगा तो यू विल गेट सीएसवी फाइल, जेसन फाइल, और वैसे की फाइल मिल सकती है। और इवन ऑल्सो इन रियल टाइम यू डोंट गेट द फाइल, यू स्टोर इट इनटू अ सर्वर, और आप डेटा सेट बना के रखोगे बट यू विल स्टोर इट इनटू समवेयर इन सर्वर। तो वहां से आप स्ट्रीमिंग करोगे और उसको कंटिन्यूअसली ऑपरेट करते रहोगे, या एक तो कंटिन्यूअसली करोगे या शेड्यूल, वहां पे शेड्यूल लगाओगे। लाइक एडब्ल्यूएस में एक शेड्यूलर है, वो आफ्टर आप बोलोगे उस टाइम पे वो वर्क करेगा और वो मॉडल को रन करके आपको आउटपुट देगा। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीजें आपको बताया जाएगी। लाइक अभी यहाँ पे मुझे बहुत कुछ चीजें पता नहीं है, एस टी डिप्रेशन मुझे पता नहीं है, मैक्स एच आर मुझे पता नहीं है। सो इसके बारे में मैं क्या कर सकता था, आई गो ऑन गूगल और मैं गूगल को पूछ सकता था कि ये चीजें क्या है, तो मुझे गूगल बता देगा। ऐसा नहीं कि गूगल के पास इन चीजों का मतलब पता नहीं है, कुछ चीजों उसको पता नहीं होगी, बट यू हैव टू। बस अभी ये किसके रिलेटेड है, मेडिकल या डॉक्टर फील्ड के रिलेटेड है, तो यू कैन कांटेक्ट योर फ्रेंड जो डॉक्टर की डिग्री ले रहा है, उसको कॉल करो, या किसी यू कैन नॉट आस्क केमिस्ट, बट किसी जो पढ़ाई कर रहा है उसको पूछो, जो फार्मा में पढ़ाई कर रहा है उसको पूछो, so you'll get all the information. Okay, after that what we gonna do, df.info. so df.info डालने के बाद हमें क्या मिला, कि हमारे जो कॉलम है, वी आर हैविंग अ 14 कॉलम, उसमें से हार्ट डिजीज इज आवर आउटपुट कॉलम एंड ऑल अदर आर आवर इनपुट कॉलम। ओके, दिस इज द डिपेंडेंट कॉलम एंड दिस इज द इंडिपेंडेंट कॉलम, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी हैव लाइक 270 रोज एंड ऑल द वैल्यू आर नॉन नल, मतलब नल वैल्यू उसमें कोई भी नहीं है। वी हैव लाइक वन ऑब्जेक्ट which is output and all other are int and float। so इसमें से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी ये इंफॉर्मेशन क्यों होना जरूरी है, कभी आउटपुट में हमें ऑब्जेक्ट टाइप है तो उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करता है आईएनटी में, दैट्स आवर प्राइमरी गोल, कि उस अल्गो लगाने से पहले वो करना ही करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई द अल्गो ऑन ऑब्जेक्ट फिल और स्ट्रिंग पे आप नहीं लगा पाते हो उसको, आपको आईएनटी में या फ्लोट में लाना जरूरी है। तो इस पे से हमें इन्फो से ये समझ में आता है, by using the info method you get such a information। after that what we do, df dot is null dot sum, by using that you will get all the null value in your null value in the your columns, like in age, sex, chest pain, type, bp, you don't have any null value in your data set, so we have zero null value। after that what we gonna see, in our data set, our output is heart disease, you can see here heart disease is our output। so I'll write df dot, I'll put it heart disease and I want to know कि इसमें कितने यूनिक वैल्यूज है। I know there are only two unique values, but still, if you go on a data set, if you go on a data set, you can see here one is present and second is absent, but you cannot see the entire data here। So you'll just write what you're gonna do, you'll just write a value dot count, so value slash underscore counts, and you'll get all the like 150 are absent and 120 is present। so present mean he's having or he had a heart attack, or like absent and present likewise। okay, then we can check the unique value in our data set, but when we apply the unique value in our data set, if I want to check key like in chest pain, how many type of unique value I have, by using so df dot, you'll just put it, oh sorry, df, and you just write that, and you can again use the value count। okay, you can just use the value counts and you'll get a unique value, like when chest pen type 4 is this one, or you can use uh, this statement also, like you can use n because it is a numerical value, and after that you write n unique value, unique and unique, and you will get number of unique value are four type of chest pen are there, one, two, three, and four। okay, so you get a insight, and this is what we are understanding our data। सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना मतलब डेटा को खोल खोल के खरद खरद के उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, कि ये डेटा क्या है, इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम है, हाउ मेनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज आर देयर, कितने कैटेगरी है एक कॉलम में, कितने कैटेगरीज है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट टाइप,
किसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट फीचर है, ये सब एनालाइज करना ही एक डेटा साइंस का एक टास्क होता है, वन ऑफ द टास्क। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यही काम है उसका, ये वन ऑफ द टास्क है। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, हम हमारे पास कौन से कैटेगरिकल वैल्यू है अभी हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। यू कैन सी वी हैव अ 6 विच इज अ कैटेगरिकल वैल्यू। सो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे मैं एक मार्कअप कर लेता हूँ और आई जस्ट राइट 6 हियर बिकॉज इट इज वन ऑफ द, और I'll take one more column before I have to add one more. Okay, and I'll just write df dot head and I'll put it here. So now हमारे पास 6 है, देन वी हैव अ चेस्ट पेन, यू कैन सी वी हैव like 4 type of chest pen. After that we have bp and it is an integer continuous value, you cannot say it is a categorical value. Then we have a fbs over 120, and I don't know it is uh, a categorical or it is we have all the null value. So what you can do, you can add like you can just put it here and you use df, you'll just write uh, let's check we have a unique value or not. So I'll just add that and I'll get, yeah, we have a two values over there, so I can add this column as a categorical column. So we have now 3 columns. Now this is a, again you can add one more a network and you can ask, okay, write it here. I'm copy pasting, you can copy paste also because it consume less time, but sometimes it give you a hectic task because you maybe jumble there, and that's the problem. So we have a fourth categorical value. After that we have a max hr, and I can see here it is a not categorical value, as I can see it is not a categorical value. After that we have exercise size angina, I don't know what is mean by that, but I'll add a network here. I'll just try to get how many type of category we have in this column. So I'll just put it here. Let's try. We have a two categories, so I'll just write in our categorical it is one of the categorical data. So we have now we can see, after watching a data you can analyze it is a categorical value, but you are not confirmed when you see the data. You can only watch the four or first 5 rows, but you cannot see the entire data set. So you have to be sure, and for that you are using this method to get assurance that we have only two categories or more than, or only one category. Okay, so for that there is no call one category one value, or if it is one value you cannot add as a category. That's why I'm just saying. Okay, then we have a slope of st and we take that. After that we have number of vessels fluoro. So I'll again add a network, I'll just copy and paste here, and I'll just right put it here, and let's see, we have a four number of categories in this one. So I'll just okay, and after that I'll see thelin thellium, I don't know what is thellium, but actually I should be prepared uh, before taking this video, because to know what is that mean here. But let's see, we have three categories here, you can see now. So I'll get my all the categorical value, you can see these are the categorical value we have, like 6 chest pen type, eb fbs over 120, ekg result, exercise angina, I don't know what is mean that, slope of st, number of vessel fluoro, and thelinium, sorry, not a thelinium, thellium. So
After getting all the categorical value, you can even store that uh, as a in a one list, that we have these are the categorical value and these are the continuous value. Like you can see here, age is a continuous value, bp is a continuous value, cholesterol is a continuous value, max hr is a continuous value, and st depression is a continuous value. So you can see that after after doing that, you understand what are the categorical value, what are the continuous value in your data set, that you have, now we'll move forward, and we'll take one of the markup, and I just put eda. What is mean by eda? Eda means exploratory data analysis. What is mean by eda? Eda means exploratory data analysis, and it is again one of a task of a data scientist, because ये आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो. So what we gonna do here, we are going to play with our data, and we understand more what is that data, and means uh, so we are going to plot some graphs here, pie charts, or count plot, or bar plot, to understand more our data. Okay, so we have imported our library called Seaborn as a SNS. So I'll just write sns dot count plot. Okay, and in count plot x, I'll pass my x. You can see x is df of what I'm going to pass: heart, heart disease. Okay, so let's see. So you can see here, I'm getting a in heart disease, like you can see here the plot. You can see the plot. Okay, after that I'll give a u. So u is 6. You may have यहाँ पे, yeah, I have to define data is equal to df. Let's see. Okay, it is not getting that. Let's wait just. mm, yeah, s is capital. I'll just write it. So you can see here, uh we have not categorized our data. Like you are here, you can see 1 is a male and 0 is a female, means blue is a female, and orange is a male person. So like you can see the and presence and absence is given. So you can see here the presence, most of the heart attack happen are for, means which are uh, जो लोगों को हार्ट अटैक हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी इट इज लो डिनोटेड बाय ऑरेंज कलर, एंड उसमें सबसे ज्यादा यू कैन सी हियर आर मेन पर्सन. ओके, तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हुआ है? एज अ मेन. ओके, तो आपको डेटा देख के ये समझ में आता है कि व्हाट यू हैव, लाइक हियर नाउ वी हैव लाइक one more parameter called platter or platter something. Just give me a second. I'll just, okay, I'll just write the color code, because we have a color code here. I'll just write hash, uh, and you'll get all the color code on, or a platter code on that side Seaborn. So you don't need to mug up all this color code. Okay. Okay, I'll just go on Seaborn, because I am having a problem right now कि क्या चल रहा है. I'll just go on statistics. Just give me a second कि हम क्या कर, because it's not necessary, but if we have a good color code, it will be very interesting to watch, and when you show it to your customer or client,
इट विल बी रियली इफेक्टिव। ओके, तो कभी कभी ये देखना भी जरूरी है कि क्या, लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू मिनट ऑफ योर, एंड आई एम नॉट पॉजिंग बिकॉज आपको भी जब ऐसी तकलीफ आएगी तो आप भी क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यू विल जस्ट गो ऑन, गूगल इट आउट एंड यूल गेट ऑल द थिंग, लाइक जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप भी वैसे ही कर सकते हो। ओके, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। मैं इसमें देखता हूँ कि है कि यहाँ पे प्लेटर्स, गूगल, हाँ, प्लेटर नाम से कुछ है क्या? ट्यूटोरियल्स, स्टाइल दिया है, स्मोकर थीम, ओके, स्टाइल भी है, स्टाइल फाइंड, लेट्स गूगल इट आउट। ओके, सी बॉन प्लैटर, कुछ तो भी होता है ऐसा, ये बताएगा कि नहीं बताएगा, आई डोंट नो यार, इसमें है क्या? लेट्स सी। ओके, आई डोंट थिंक सो मुझे मिल रहा है अभी, और मैं आपको बता पाता इस वीडियो में। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओके, पैलेट्स बोलते हैं उसको, और मैंने कुछ गलती लिख दिया वहां पे, एंड दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू जस्ट, कभी कभी होता है ये, पैलेट्स बोलते हैं उसको, और still I'm not getting my answer is not a valid palette, पैलेट बोल रहा है वो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इस पे वापस आता हूँ, एंड यू कैन सी यहाँ पैलेट क्या है, क्रेस्ट लिखा है उसमें, आई जस्ट यूज द क्रेस्ट ओवर देयर, क्या देता है देखते हैं। ये इसको निकाल लेते हैं। सो क्रेस्ट ऐसा कलर होता है। ओके, और इसको मैं लेना चाहता था, जस्ट गिव मी सेकेंड अभी, और हमने इतना कुछ, हार्ट, हार्ट रेट, लेट्स चेक, नहीं आ रहा है यार मुझे, हार्ट रेट बोल के कुछ भी नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग। let's take one, just give me a second, I know I'm taking heart heart rate is equal to, and I'll just put hashtag d d76 fet, I have write it down here actually मैंने यहाँ पे लिख के रखा था कि बाबा ये आने के बाद मैं बताऊंगा आपको, और ये नहीं हो पा रहा है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, दैट्स द थिंग ओनली। और अभी मैं यहाँ पे यूज करूँ तो होता है क्या? नहीं, इट इज नॉट, आई डोंट नो, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, कैन एनीवन प्लीज टेल मी। ओके, आई क्रेस्ट को ले लेते हैं हम। ओके, सो राइट नाउ यू कैन सी हियर, आपको इस काउंट प्लॉट में, काउंट प्लॉट से समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। ओके, एंड विल मूव फॉरवर्ड, अभी हम बहुत सारे प्लॉट करने वाले हैं, और इसका जरूरत है जब आप क्लाइंट को बताते हो, तो यू नीड दैट। ओके, ये इसमें कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया, जस्ट, हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, एंड विल टेक अ, अभी हम क्या लेने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, like we have a heart disease on x-axis, on hue what we gonna take, we'll take a, uh, let's try with the, like we have chest pen type, तो हम यू में चार टाइप के चेस्ट पेन है, तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 बार प्लॉट। ओके, यू कैन सी हियर, तो कौन सा सबसे ज्यादा आता है, द फर्स्ट, यू कैन सी द फोर्थ नंबर इज वेरी, जब आता है तो समझ लेना कि वो पर्सन, बंदा ज्यादा करके
third and fourth, like you can see present, absent. ओके, सो फोर्थ वाला जब आता है ना, तो यू कैन सी कि बंदा जाने ही वाला है, मतलब उसमें उसके चांसेस आर वेरी नॉमिनल कि वो बच पाएगा। चेस्ट पेन टाइप 4 जब होता है, तो लाइक देयर आर मोर चांसेस कि वो बंदा जाएगा और वो बंदी जा सकती है। सो ये इस एनालिसिस से हमें हमें समझ में आता है। बाय यूजिंग दैट एनालिसिस वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या दिक्कत आ रही थी और किसके वजह से हो रहा था। नाउ we can check that by using the, we have like one more uh like we'll go fsb over, and I'll just put it here like chest. I'll replace the chest pen type. So you can see here, जब जीरोथ वाला मतलब एफ एफ बी एस ओवर 120, जब जीरो नंबर का होता है, कैटेगरी ऑफ जीरो, तब मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइड। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। आपको इसमें से क्या नॉलेज मिल रहा है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये आपको अपने क्लाइंट को भी शो करना होता है, या आपकी जो टीम है उसको आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि आपको इस डेटा सेट से क्या इंसाइट्स मिले। ओके, सो वी हैव अ ईकेजी रिजल्ट, तो अब उसको हम यू पे डालेंगे एंड विल सी कि हमें इसमें से ईकेजी लगाने के बाद क्या होता है। यू कैन सी ईकेजी रिजल्ट जब मैं लगाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसमें तीन कैटेगरीज है, जीरो, वन एंड टू। एंड जब जीरो एंड सेकेंड वन है, तो उस टाइम को मोस्ट ऑफ द पीपल आर डाइड, यू कैन सी। और देर आर मोर पॉसिबिलिटी कि वो बंदा नहीं बच पाएगा। ओके, ओके, विल मूव फॉरवर्ड एंड विल सी कि अबे हमें क्या देखना है। नाउ वी हैव वन मोर कॉलम ओवर देयर, वी कैन जस्ट कॉपी दिस लाइन। आप बोलोगे ये सब काउंट प्लॉट लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही, बिकॉज वी हैव अ कैटेगरिकल डेटा, तो हम काउंट प्लॉट वहां पे ही लगा सकते हैं। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। अभी ये जो स्लोप एस टी है, स्लोप ऑफ एस टी है, वो हम यहाँ पे यू में रिप्लेस करेंगे एंड वी कैन सी कि हमें क्या मिल रहा है। So you can see here slope of estimate थ्री कैटेगरीज है, वन टू एंड थ्री। जब सेकेंड नंबर वाली कैटेगरी होती है तो मोस्ट ऑफ पीपल आर डाइड। ओके, मतलब वहां पे चांसेस आर हाई कि वो बच ना पाए। ओके, present and absent. Okay, sorry. I'm telling you all the presence means he's present and absent means he's gone. So जब slope of st is 1, there are more chances कि वो uh, बंदा मर जाएगा। एंड हियर ऑल्सो जब देर आर लाइक जीरो एंड वन, यू कैन सी जीरो एंड वन, absent means he is gone. So लाइक जब जीरो और वन कैटेगरी आती है ईकेजी रिजल्ट में, तो he's died most of time. एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी कि जब जीरो आता है तो देर आर हाई चांसेस कि वो जाएगा बंदा। ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। now we have a continuous value, you know, we have like some continuous value over there। तो अब हमें ये निकालना है कि एक एवरेज एज क्या है, मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू डायग्नोसिस विथ हार्ट डिसीज, क्या एक एज हो सकती है। सो विल फाइंड आउट दैट बाय यूजिंग df डॉट एज। विल जस्ट राइट df dot a, no, before that what I need, I have to find out कि disease, heart disease हो रहा है या नहीं है। So I'll just write heart and disease and जहाँ पे प्रेजेंट है वो निकालना है, मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वाला निकालना है। सो आई जस्ट राइट प्रेजेंट हियर, प्रेजेंस, सॉरी, नॉट अ प्रेजेंट, प्रेजेंस निकालना है बिकॉज इट इज गिवन एज अ प्रेजेंस। तो प्रेजेंस लिखने के बाद आई गेट कि कौन से ट्रू है और फॉल्स है। तो अभी कौन से डेटा में से निकालना है मुझे। तो इफ आई राइट, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट देना है, यहाँ पे मैं डीएफ लिख दूंगा, तो आई गेट वो कॉलम, वो जो जो रोज है मुझे प्रेजेंट वाली वो मिल जाएगी। लाइक 120 रोज आर लाइक
जिनको जिनको हार्ट अटैक हुआ है, लाइक प्रेजेंट वाली रोज मुझे मिल गई। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, उसकी एज क्या है, तो आई जस्ट राइट हियर एज। ओके, एंड आफ्टर दैट आई पास डीएफ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या लिखा है। एंड आई पुट हियर अ मीन टू get a average age of that person. So what, why I'm not getting, there is something I have done wrong, I think so। okay, so मैंने मीन निकाला है, एंड आफ्टर गेटिंग अ मीन, और यहाँ पे अभी मुझे ये प्रेजेंट वाली जो जितनी भी है वो मुझे मिल गई। ओके, एंड मुझे मिनिमम एज चाहिए थी, तो सो आई कैन राइट जस्ट मीन and I'll get a mean value like 35 is a minimum age of a person जिसको हार्ट अटैक हो सकता है या हुआ है इस डेटा सेट के अनुसार। और अभी यहाँ पे आप मैक्सिमम एज बोलोगे तो मैक्सिमम एज भी निकल जाएगी कि प्रेजेंट में, तो मैक्सिमम एज भी निकाल लेते हैं। लेट्स ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम जस्ट बाय पुटिंग हियर एज अ मैक्स, एंड आई गेट 77 एज वाले को भी हो सकता है। ओके, 35 या इस डेटा में 30 वाले को भी हो सकता है, तो इसका भरोसा नहीं है हार्ट अटैक। इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रेस मत लो ज़्यादा लाइफ में, थोड़ा सा काम करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो और लाइफ को सुखी रखो, मतलब एक सुखी समृद्धि जीवन जगो। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। हम क्या करेंगे कि हम ये निकालेंगे, हम यहाँ पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट, ग्रुपिंग करने वाले और कैटेगराइज करने वाले बाय यूजिंग अ एज। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफ डॉट ग्रुप बाय लेंगे। ग्रुप बाय किस पे करने वाले, लाइक वी आर डूइंग ग्रुप बाय ऑन हार्ट डिजीज, डिजीज by using a age column. I'll write age, and I want a mean of that age. So what I'll get कि जो जिसको हुआ है, लाइक absence मीन्स और प्रेजेंस। अभी ये इसका हार्ट डिजीज absence मीन्स उसको नहीं हुआ है, एंड प्रेजेंस मीन्स उसको हुआ है, आई थिंक सो। सो प्रेजेंस, अरे मैंने क्या किया, ओके, तो उसका मीन वैल्यू हमने निकाल लिया, एज का मीन वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू यूज द ग्रुप बाय। और इस पे से हमें पता चलता है कि उनके एज में से ज्यादा, जिनकी एज है, लाइक जिनकी एज लाइक ज्यादा है, उनको मोर आर मोर पॉसिबिलिटी कि उनको हार्ट डिजीज हो जाए। लाइक मीन मीन मतलब एवरेज जिनकी एज है लाइक 56 या 55 से आगे जिनकी एज है, उनको मोर पॉसिबिलिटीज कि उनको हार्ट डिजीज हो जाए, और लेस पॉसिबिलिटी जिनकी 50 या 52 के नीचे एज है उनको लेस पॉसिबिलिटी है, बिकॉज होता है। ओके, ऐसा एक सर्वे भी है और एक डेटा सेट हमें मिला है, तो उसमें लिखा गया है मिनिमम, मतलब मिनिमम लोगों को ऐसा ही होता है। ओके, देन विल गोना प्लॉट कि हमारे पास एस एन एस डॉट डिस डिस प्लॉट, तो ये हमें क्या, डिस प्लॉट क्या देता है अभी वो हम डिस्कस करेंगे। डिस प्लॉट हमें देता है, और यहाँ पे हम एज दे देंगे। सो यू कैन सी वी गॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, लाइक 30 एज है, तो उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे डेटा सेट में। और मोस्ट ऑफ लाइक 60 वाले एज वाले है, वो यू कैन सी हियर। तो यू कैन सी कि डेटा सेट में मोस्ट ऑफ पीपल आर लाइक 50 60, और उसके लाइक 30 वाले कम है, बिकॉज इस डेटा सेट में 30 के कम है, बिकॉज उनको हार्ट अटैक कम होते हैं, तो उस डेटा को लिया ही नहीं है जो मोस्ट ऑफ कम लोगों को होता है। तो ये डेटा सेट आपको समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मिल गया है। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द एस एन एस डॉट बार प्लॉट। ओके, let's try to do that sns dot bar plot। I'll pass my x as a df of uh, heart disease, disease, and we should pass our y। तो y, what should be the y, y हम पास करेंगे
df of we have bp. Let's write bp and pass here. So you can see on y-axis I have a BP, on x-axis I have heart disease presence or absent. So जिनका बीपी ज़्यादा होता है मोर पॉसिबिलिटी उनको हार्ट हार्ट डिजीज होने के चांसेस है. सो कंट्रोल योर हार्ट बीपी. ओके. तो स्ट्रेस लेना कम करो तो आपको बीपी के त्रास नहीं होगा या बीपी का जो है बीपी नहीं होगा और उसके वजह से आपको तकलीफें नहीं होगी. Okay, then we have like again we can plot by using, we just copy and paste here, and I'll write here we have not taken this column, so I'm just taking max hr. And you can see here जब जब max hr है तो like absent, the person is not having a heart disease but less chances है उसको होने के. Okay. And we can see the st dot depression, we have not taken that, we can take that here. So I'll just write st is t. I'll just go here and I'll check कि उसका st dot depression. Okay, I'll just copy here and I'll just put it here. Okay, we'll just wait. Okay, so you can see जब जब st dot depression ज़्यादा है, स्ट्रेस डिप्रेशन, आई डोंट नो एस टी डॉट डिप्रेशन, बट जब जब ज़्यादा है तो देर आर मोर चांसेस कि उसको हार्ट डिजीज हो गई. ओके. सो इसमें से हमें ये मिला. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट वन ऑफ द ये क्या कर दिया मैंने. ओके, इसको मैंने कोड में कन्वर्ट करते हैं एंड आई जस्ट पुट इट हियर. ओके. नाउ उसको मार्क डाउन करता हूँ और इसमें से एनालिटिक की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत जरूरी है और इसका नॉलेज जिसको है ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड डेटा वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली बाय यूजिंग दिस टर्म. सो दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन रिलेशन. ओके, राइटिंग राइट, कोरिलेशन मैट्रिक्स. तो ये आपको पढ़ते आना चाहिए क्या है कोरिलेशन मैट्रिक्स, क्या होता है. सो यू जस्ट राइट df डॉट कोर and you'll get correlation. You can see this is the correlation, and now this correlation we are going to plot by using a heat map. तो अभी हीट मैप क्या होता है, उसको प्लॉट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें से हमें क्या समझने वाला है. तो कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो बिफोर प्लॉटिंग अ कोरिलेशन हीट मैप, we just write plt dot figure and uh, in bracket I'll just write pass my fig size is equal to 10 or 20. You can put sorry, my numlog is log, that's why it is head. And I'll just pass 50. I'll just complete that. Okay. I'll get 2000 by 1500 का मुझे x axis and y axis पे मुझे ये मिलेगा. So after that sns dot heat map and I have df dot correlation जैसे हम निकालते हैं. And you can write one more thing, anatomy. यहाँ पे बहुत कुछ होता है बट anatomy is equal to true, ये लेना जरूरी है. Okay, I have not completed that. Let's see. और ये प्लॉट होने में कभी कभी टाइम लेता है. नाउ इट इज प्लॉट वेरी इजीली. सो यू कैन सी एनाटॉमी जब आप ट्रू करते हो तो यहाँ पे आपको डिजिट्स मिलते हैं. वो देख के आपको पता चलता है कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है. तो इसका ये पढ़ने के लिए एक जरूरी बात है कि कोरिलेशन कब होता है. गुड कोरिलेशन इज व्हेन you have value between a positive correlation. When is positive correlation? When we have a value between point uh, point 7 to point 9. like जब point like point 2 to point 7 जब हमारे पास वैल्यू होती है तो हम उसको बोलते हैं गुड कोरिलेशन. लाइक हियर यू कैन सी, लेट्स चेक इसमें कोरिलेशन कहाँ पे अच्छा है. लेट्स टेक like one. I need a good
अच्छा वाला कोरिलेशन मैं आपको निकाल के देता हूँ, जस्ट गिव मी सेकेंड। Like here you can see point 0.6, it is a good correlation, it is between point 2 to point 9, इसका कोरिलेशन का भी कुछ ये होता है, सो यू कैन जस्ट गूगल इट आउट की उसकी रेंज होती है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है, और देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन अ वैल्यू, तो वो भी होता है, तो वो आपको निकालना बहुत जरूरी है। एंड यू कैन सी हियर द कोरिलेशन, एक बैंड मिलता है, तो आपको उसमें समझ में आता है कि जो निगेटिव में जाता है ना, -0.2 to 0.7 is a negative correlation, 0.2 to 0.7 is a good correlation, and there is a one, it's like a no correlation, like something like that, वो कुछ काम का नहीं होता है, like it is very correlated, or it is ये होता है, तो वो जो वैल्यू है, लगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यूज मैं पुट डाउन कर दूंगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट वैल्यू रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, अदरवाइज मैं कुछ बता दूंगा और उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। सो विल गो एंड मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग? लेट्स डू दैट, data processing. I'll just mark up that line code here, and I'll put here a data प्री प्रोसेसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा प्री प्रोसेसिंग। व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग? डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब डेटा को अच्छी तरह से प्रोसेस कर लो बिफोर अप्लाइंग अ अल्गो। ओके, when you are trying to apply a algo, just try to process the data। कभी कभी डेटा प्री प्रोसेस होता है तो आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है, बट यू हैव समटाइम यू डोंट गेट दैट डेटा इन द प्रोसेस फॉर्मेट, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग द इनकोडिंग, बाय यूजिंग importance of that feature engineering, we do feature selection। ये जब टास्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर। ओके, सो और एक चीज जो हम इनकोडिंग करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आई जस्ट डू द मार्कअप अगेन, and I'll write here encoding। Okay, encoding। Okay, and one of my subscriber commented down below on my previous video that the code is not working because in one of the video I have used the map function in insurance video. You can go and watch that video. I use the map for a encoding over there, and because of that, when you use the map function, if you are getting a error, you just have to restart your code, or you have to rerun your code from starting। then there is chances कि आपका जो कोड में कुछ एरर आया है related to a mapping or encoding, it will be remove, or it will be very correctly verified। okay, वो correct हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू, मतलब वो कुछ है किसी ने डाला है वहां पे, तो जस्ट गो एंड चेक, और यू कैन यूज द encoding technique from sklearn pre-processing। So we are going to use that encoding here, so we'll just import sklearn from sklearn dot pre-processing import, uh like we what we have just okay, we have label encoder, so we are using the label encoder, and I'll just write le is equal to label encoder, and we have just created one uh, le as a क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट हमने एक एली को इनकोडर इन लेबल इनकोडर में डाल दिया। नाउ वी आर गोइंग टू फिट ट्रांसफॉर्म ऑन आवर डेटा सेट। सो वी हैव आवर वाई एज आउटपुट जो है हमारा हार्ट, आई जस्ट राइट इट हियर, हार्ट डिजीज डिजीज, वो कैटेगरिकल वैल्यू है, प्रेजेंस एंड, यू कैन सी प्रेजेंस क्या क्या है हमारे पास, जस्ट गिव मी प्रेजेंस एंड absence है वहाँ पे, तो उसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हमारे कोड में। तो हम कैसे करेंगे वो बहुत जरूरी है। आई जस्ट राइट इट हियर एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, and I'll pass my uh,
pass my column heart is. So let's see, and I'll check my df dot head, and let's see what I got. Like you can see here, heart disease is converted into 1 and 0, 1 for presence and 0 for absent, I think so. Okay, if you go up on, you can check here, presence as a 1 and absence as a 0. We'll just go down, you can see. Okay, after doing that, what we gonna do, we are going to uh, so we have done our data set, हमने वो convert कर लिया है. Now what we need, like, just give me a second, I'll just